Hello students, welcome to Shortest classes. This is pre-RMO 2019 solution. I am solving from 16 today. Okay, so a pen costs 13 and a notebook costs 17. A school spends exactly 10,000 in the year 2017 to 18 to buy X pens and Y notebooks such that X and Y are as close as possible. So that means mod of X minus Y is minimum. नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि स्कूल वही चीज़ करता है एज लिटिल मोर देन 10,000 से ज़्यादा बाइज वाई पेन्स एंड एक्स नोटबुक्स. सो हाउ मच डिड द स्कूल पे. सो इसमें जो कैलकुलेशन होगा उसमें हमें कुछ बेसिक इक्वेशन पैटर्न को ध्यान में रखना है. ओके, सो पहला ईयर में क्या है, कॉस्ट ऑफ पेन वाज 13. ऊपर से स्टार्ट करते हैं. कॉस्ट ऑफ पेन वाज 13, नोटबुक वाज 17. So 13x, 17y, 10,000. Let us find its one solution by अगर hit and trial method से करते हैं. 13 into 3, 17 into minus 2 equal to 5 into 2000 अगर लेते हैं. So 13, 6,000 और 17 minus 4,000 equal to 10,000. Okay, so one solution can be x equal to 6,000 and y equal to minus 4,000. लेकिन यही आंसर नहीं है. So x and y has to be positive integer. So the general solution of x and y is x equal to 6,000. अगर इसको पकड़ के चलते हैं, so 6,000 plus 17t. ठीक है, तो अगर ऐसा है so y आ जाएगा minus 4,000 minus 13t, where t is a whole number. So t greater than minus 6,000 by t, so minus 352 by 0.94. So minus 4,000 minus 13t greater than 0. So t is less than minus 307.69. So t का दो वैल्यू है, 352.94 लेस t लेस minus 307.69. तो t का पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है, minus 308 minus 309 डॉट 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 minus 352. So by checking certain values and observing the pattern हम लोग ये कह सकते हैं कि t equal to minus 333 is the most acceptable value and the values of x y are as close as possible. So t equal to minus 333 में x equal to होगा 6,000 plus 17 minus 333, तो ये जा जाएगा 339 and y equal to आएगा so 329. So x equal to 339, y equal to 329. 2018-19 में y pens and x notebooks. So 17x, 13y. So 17 into 339, 13 into 329. So this is, if you add it, 10,040. So school pay 40 rupees more than this year. Next question is question number 17. It's about number of ordered triplet. Ordered triplet मतलब 1 to 3 और 3 to 1 सेम नहीं है. ठीक है, सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. So 30a plus 50b plus 70c less than equal to 343. So इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, 3a plus 5b plus 7c less than equal to 343. Sorry, 34.3. So 3a plus 5b plus 7c less than equal to obviously 34b होगा. So a plus b are natural number. Let a integers दिया ही हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर. So a equal to 1 plus b
b equal to 1 plus q, c equal to 1 plus r. ओके, सो 3p अगर वैल्यू डाल दें 7q 5q प्लस 7r अगर आया, so that is less than 1 2 3 34 minus 15, so 19. So now if r equal to 0, q equal to 0, and p can take 7 values. If q equal to 1, if q equal to 1, sorry for this, then p can take 5 values. If q equal to 2, p can take 4 values. If q equal to 3, p can take 2 values. So total 18 values. Next, if r equal to 1, then 3p plus 5q equal to this. So q equal to 0 and p can take 5 values. Q equal to 1, p can take 3 values. At q equal to 2, p can take 1 value. So this time total 9 values. If r equal to 2, three p plus 5q, then less than equal to 5. So q equal to 0, p can take 2 values. Q equal to 1, p can take a single value. So this time total 3 values. So hence 18 plus 9 plus 3 equal to 30 values. Okay, so 30a plus 50b plus 70c less than equal to 343. So 3a plus 5b plus 7c 34.3, and 3a plus 5b plus 7c less than equal to 34. So this is the total structure. So hence, so find the ordered triplets. So 30 ordered triplets. (18) How many ordered pairs A and B, of positive integers with A less than B, 100 less than equal to A, B less than 1000 satisfy GCD AB is to lambda LCM AB equal to 1:495. ठीक है, तो देखते क्या दिया है. AB क्या है, GCD A इंटू B. अगर हम लोग ले लेते हैं GCD square dot 3 dot 5 dot 11. So A by GCD, B by GCD अगर लिया, so ये भी 3 square 5 11. So 3 square equal to 5 11 12 13 dot 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 18 as 100 less than equal to AB है, और जो कि less than equal to 1000 means 10 cube. नेक्स्ट अगर 5 के हिसाब से लेंगे देन 3 स्क्वायर इंटू 11. सो यहाँ पर 0 वैल्यू, नो वैल्यू, सेम थिंग. 11 इज 3 स्क्वायर 5. सो 10 11 डॉट 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 22 सेम इंटरवल. और 1 अगर है 3 स्क्वायर 5 11, और यहाँ पर भी नो वैल्यू. सो ऑब्वियसली 7 प्लस 13, so 20. So how many ordered pairs? So total 20 ordered pairs are there. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. ओके, इसको और एक तरीके से भी, छोटा तरीके से किया जा सकता है. मान लीजिए A इक्वल टू आप लेते हैं DP, B इक्वल टू भी DQ. सो D इक्वल टू GCD आ गया.
So LCM of AB by this thing, so dpq by d equal to pq, that is equal to 495. So pq equal to 5 into 9 into 11. So into prime factors if we split, so p less than q possible. So 5, 99, 9, 55, 11, 45. So this possibility is 0, this possibility are 7 possibilities, and this possibility are 13. So remember that for this actually क्या हो जाएगा कि ये जो d का वैल्यू, b का वैल्यू 1980 आ जा रहा है, जो कि 1000 से ज़्यादा है. सेकेंड केस में d इक्वल टू 12 और 18. नेक्स्ट d इक्वल टू 10 और 22. So total possibility seven plus 13 equal to 20. Okay, next question. ए बी द डायमीटर ऑफ अ सर्किल. तो चलिए आपका पहले सर्किल कर लेते हैं, इसका डायमीटर हो गया ए बी. एंड सी बी द पॉइंट ऑन द सेगमेंट ए बी सच ए सी इज टू सी बी, AC is to CB is 6 is to 7. So we can take it this area 6x, 7x. And DB the point on the circle such that DC is perpendicular to AB. Okay. And join these. Let DE be the diameter through D. थोड़ा सा tilted होगा. If XYZ denotes the area of the triangle XYZ, mod of XYZ denotes GIF of XYZ denotes the area of the triangle XYZ. Find ABD by CD to the nearest integer value. ठीक है. So let BC equal to AC by BC equal to 6 by 7 is given. So OC क्या हो गया, where O is the origin, मान लेते origin से जा रहा है. So OC equal to 7x minus R. So OC equal to R minus 6x भी हो सकता है. So दोनों सेम है. So 7x minus R equal to R minus 6x. So R equal to 13x by 2. So OC is the median of the triangle CDE. OC is the median of the triangle CDE. तो ये हमारा CDE triangle बन गया. So area of triangle CDE equal to 2AR DCO. So AR DCO equal to half of CDE. So that is half into CD into OC, half into triangle CDE. If those two on, so area of triangle CDE equal to CD into OC. So OD is the median of ABD. अगर ऐसा हो गया, so now we can proceed कि area of ABD equal to 2 into AR into area of BOD, that is 2 into half into R into CD. CD into OC. So that is R by OC, that is R by C, R minus 6x.
if we put the value r6, x value is 2r by 13. So 13 into r, so 2r, so this is only r by 13, r cancelled out, 1 by 13, so 13 is the answer.